हमारा अखिल भारतीय संतमत सत्संग की विधि है जो मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले अपने पूजा के स्थान पर जाइए, बड़े प्यार से बैठिए। उसके बाद धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाएं। किस लिए? वातावरण शुद्ध होता है, मन प्रसन्न होता है। वातावरण शुद्ध, मन प्रसन्न और एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा। बड़े प्यार से बैठें। उसके बाद ये निश्चित कीजिए कि उस परमपिता परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। पहले स्वरूप कौन सा अच्छा लगता है? राम का अच्छा लगता है या कृष्ण का या माँ का या देवी का या शिव का? पहले यह निश्चित करें। उसके बाद कौन सी शक्ल आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? उसके बाद भी बड़े सारे स्वरूप हैं, फोटोज हैं, उसमें से जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा और अच्छा लगता है उसको चुनें। उसके बाद ये महसूस कीजिए कि वो परमात्मा का स्वरूप जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है वो सह शरीर आपके सामने विद्यमान है, शरीर के साथ विद्यमान है। बड़े प्यार से उस पवित्र मूर्त को, जिसमें परमात्मा की सबसे ऊंची भावना चुनी हुई है, उसको अपने सामने बनाएं बाय थॉट, ख्याल से, बड़े प्यार से। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, मृगशाला पर बैठे हैं और खड़े हैं। जो आपकी पसंद है अगर उसको बनाएंगे, बड़े प्यार से बनेगा, और जो आपकी पसंद नहीं है उसको बनाने की कोशिश करेंगे तो बड़ी मुश्किल से मन ठहरेगा। मन उसी पर भाग जाता है बार बार जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। मंत्र, जो मंत्र आपकी आत्मा को सबसे ज्यादा प्यारा लगता है उसको चुने। दिल की हर धड़कन पर उस नाम को सुने जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। सुनिए, और जब तक सुनाई ना दे तब तक जिह्वा से बड़े आराम से, बड़े प्यार से अपने इष्ट के नाम को ले सकते हैं। निश्चित कीजिए, ओम नमो शिवाय, जय श्री राम, राधे राधे। बहुत सारे मंत्र हैं जो बड़े प्यार से लिए जाते हैं, उसको चुने और ले, बड़े प्यार से, बहुत प्यार से, बहुत आराम से। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा को मूर्त में नहीं मानते,
वो नाम को चुने। ओम, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, जीसस क्राइस्ट, जो आपकी आत्मा को सबसे अच्छा लगता है उसको चुने। बड़े प्यार से बैठिए, आनंद में, कोई टेंशन नहीं। ये महसूस करें कि हमारे हृदय से ओम की आवाज निकल रही है, पूरे शरीर में वाइब्रेट करती है। हृदय ओम ओम कहता है, जबान नहीं कहती। और जब तक ऐसा ना हो, बड़े प्यार से आप अपने इष्ट के नाम को ले सकते हैं। ओम, ओम, मंत्र ओम, ओम, बड़े प्यार से ओम। महसूस कीजिए उसकी वाइब्रेशंस। और जब तक आप ध्यान करते हैं, अपने इष्ट की मूर्त अपने सामने बनाते हैं, आनंदमयी अवस्था बनाते हैं, हृदय की हर धड़कन पर अपने इष्ट का नाम सुनते होते हैं, तब तक कोई दूसरा विचार और ख्याल नहीं आना चाहिए। उस नाम का इतना प्रेशर हो कि और कोई बात उस समय ना आपके दिमाग में है ना ख्याल में, इतना प्रेशर होना चाहिए। पर होता क्या है, हम संसारी हैं, 24 घंटे संसार में हैं, दुनिया में हैं। जब आधे घंटे कि हम पूजा करेंगे सुबह, आधे घंटे सायंकाल, तो उस समय ऐसे ऐसे विचार हमारे सामने आएंगे जो जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। उन विचारों को हटाएं, अपने इष्ट की याद में लगिए, फिर हटाइए, फिर अपने इष्ट की पवित्र मूर्त को बनाए जो साकार पुजारी हैं, जो निराकार है। वो फिर अपने इष्ट के नाम को लेना शुरू करें। फिर कोई दूसरा विचार आएगा, उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए, फिर हटाइए, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए। अगर ये अभ्यास करेंगे तो कुछ समय बाद आपका मन आपके इष्ट के चरणों में लगा होगा, ना कोई दूसरा विचार रहेगा ना ख्याल। ऐसी चैतन्य मूर्ति आपके इष्ट की आपके सामने होगी। हृदय की हर धड़कन पर अपने इष्ट का नाम निकलता होगा। बड़ी आनंदमयी स्थिति होगी और बड़ी सुंदर स्थिति, आनंदमयी स्थिति प्राप्त होगी। जितना मस्तिष्क पर भार था ग्रस्त का, जो सॉल्व नहीं होता था, बड़े मजे से, बड़े प्यार से बैठ के आप उसका हल निकालेंगे। जीवन बड़ा सुंदर और अच्छा बनता चला जाएगा। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। श्री शर्मा जी भजन कहेंगे। तक रंग न उतरे, ऐसी रंग दे श्याम चुनरिया, श्याम चुनरिया, जन्म जन्म तक रंग न उतरे। रंग न जिस पर चढ़े दूसरा, और न जो फीका पड़ जाए, उसी प्यार के रंग में रंग दे। जो दिन दिन दूना गहराए,
जिसके रहते ढले न यौवन, भार न हो कभी उमरिया, जन्म जन्म तक रंग न उतरे। हर दर्पण तेरा मुख देखे, हर मुख में तेरी ही छाया, सांसों में वो सिसकी भर दे, निस दिन प्राण रहे अकुलाया, नींद न आए जन्म जन्म तक, ऐसा आंजन आंज दे अखियां, जन्म जन्म तक रंग न उतरे। आज वही धुन छेड़ मधुरतम, जाग उठे यादों का मधुवन, ब्रह्मनाद में ऐसा डूबूं, टूट जाए माटी के बंधन, सुध न रहे मेरे तन मन की, ऐसी आज बजारे बांसुरिया, जन्म जन्म तक रंग न उतरे। ऐसी रंग दे श्याम चुनरिया, श्याम चुनरिया, जन्म जन्म तक रंग ना उतरे। परमात्मा।
Jai Sadgurudev, Jai Pacharnam, Anand Yog, Volume 2, Chapter 5, Satnam. Satguru, Satsang, and Satnam is the trinity to achieve spiritual enlightenment. First two have already been dealt in detail. The third essentiality is Satnam, that is, the name of the Lord, which is of two types. One, name associated with the alphabets, Varanmala, that is vocal. Two, name associated with vibrations, Dhunatmak. It is difficult to draw a line of distinction between the two, but it should be borne in mind that the vibratory name is melodious and tuneful. The alphabetical, that is, vocal name can be Om, Ram, Krishna, Shiv, Allah, Ali, God, Christ, Vaheguru, or any other name which an aspirant thinks to be the most appropriate to be given to the omnipresent Almighty Lord. However, for achieving meaningful result, only one name should be chosen, and that should be the most appealing to the heart of the aspirant. Glory of the Lord's name. The glory of Satnam is sung from times immemorial by rishis, maharishis, saints, mahatmas, and sufis from time to time. Sant Tulsidas has described the glory of the Lord's name, even greater than the Lord himself. देखियहि रूप नाम आधीना, रूप गयान nahi naam vahina. Name enables you to distinguish. Without name, nothing exists. Jana chahi गूढ़ मति जेऊ, नाम जीह जपि जानहि तेऊ. साधक नाम जपहि लय लाए, हो ही सिद्धि animadik पाए. Sant Tulsidas says, those who want to know the secrets of thee, remember thy name and realize the truth. Sadhaks who remember thee with heart and soul become siddh and achieve untold occult powers. He further declares, नामु लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही. Remembrance of the Lord's name dries up the ocean of Maya. Men of wisdom should be aware of the fact. Agun sagun dui brahma sarupa, akat agad anadi anupa. More mat bad naam duhute, kiye jehi jag nij bas nij bhute. Brahm assumes form for the real devotee, though formless. Source of all that is creation, though actionless. Omnipresent, omnipotent, omniscient art thou not. Infinite, incomprehensible, pure, absolute, beyond words, who says not. But Tulsi regards his name to be superior to all. Name alone makes known the creation. Guru Nanak Dev has regarded Satnam, the only one Onkar, as the basis of all existence. It is the creator, sustainer, and destroyer. एक ओंकार खुदा है वाहिद, सच्चा जिसका नाम, करता धरता दुनिया का, बेडर बेलाग मुदाम. मौत से बाला पाक जन्म से, कायम अपने आप, अपने गुरु की रहमत से, तू नाम उसी का जाप. The only one Onkar is the truth, the only creator, sustainer, fearless, enemy to none, beyond time and distance, birth and death, ever existing, pure, absolute, and infinite. By Guru's grace, remember only thee.
नाम सुने से रास्ता पाएं, योग और तन के भेदों का, राज खुले सब स्मृतियों का, शास्त्रों का, वेदों का. Guru Nanak Dev says, listen the name of the Lord with heart and soul. Satnam reveals the secrets of yoga, and the self opens the hidden treasures of Shastras, Smritis, and of the Vedas. नाम सुने से दूर करें हम मौत के सब जंजालों को. Listen to the Satnam, heart and soul. Satnam destroys the fears of death. ऊंचों के भी ऊंचे से है, ऊंचा या रब नाम तेरा. इतना ऊंचा कौन भला जो उस ऊंचे को जानेगा. सब ऊंचों से ऊंचा हो जब ऊंचे को पहचानेगा. जाने आप बड़ाई अपनी, समझे अपनी अजमत को. उसकी चश्म करम से नानक बख्शिश हो और रहमत हो. Guru Nanak Dev further emphasizes the glory of Satnam and declares its unequivocal terms. Satnam is the highest amongst the high. Who is so high who will know the highest? Only the highest among all the high will realize that high. He alone knows his glory and alone knows his powers. Only his kind and benevolent looks will save Nanak and share bliss eternal. नाम पे जो ध्यान लगाएं, मेहनत खूब कमाएं, नानक मुँह पे नूर हों, उनके साथ ही मुक्ति पाएं. Whosoever will concentrate on Satnam, their practice will surely bear fruits. Nanak declares, they will develop divine aura around their face. Sadhaks who come into contact with such saints are sure to get salvation, freedom from the cycle of birth and death. जिन संतों की पाक जुबां पर नाम खुदा का रहता है, अदना चाकर उनके दर का नानक खुद को कहता है. The saints who remember the name of the Lord day and night, who even for a split of second don't forget him. Nanak regards himself a humble servant at their door. ऐसा नाम जपे जा ए दिल, रब से प्रेम लगाए जा. संतों की संगत में नानक नाम खुदा का पाए जा. O my heart, concentrate on such a name. Develop unadulterated love with thee. Nanak says, amass the wealth of Satnam in the company of the saints. The practice of concentration on Satnam, Pranav Upasana, is the easiest and most fruitful to achieve self-realization, Atma-darshan, and true knowledge, Tattva-gyan. This practice enables the sadhak to realize the truth and discover the self in the shortest possible time, the realization of which is regarded as most difficult even for the yogis. The creation Pranav, Om, Satnam, is the cause of life and sustains it. Before the creation came into being, there was absolute darkness, and the matter was dense and completely in an inert form. The Lord of creation, Chaitanya Brahm, was enjoying deep sleep. This was the period of absolute rest, the great night of inaction, Pralay ki Ratri. After the period of rest, the Lord of creation, Adi Brahm, woke up and desired to create the universe, Shrishti Rachna. His thought power produced action in the inert matter with a big bang,
and the elements started moving in circular orbits. This sound was the first perceptible thing which gave life to the inert matter and started the elements into motion. The motion of these elements produced melodious and tuneful vibrations, and along with this sound, the work of creation of the universe started. The Lord of creation, in the form of this word, Shabd, gave life, Pran, to the entire creation, and such it is known as Pranav. When rishis, maharishis, and the great saints heard this melodious, tuneful word, Shabd, in Samadhi, they felt that somebody is producing this tuneful sound similar to Om, and as such named the Paramatma as Om. Muslim saints, when heard it described, it similar to the sound produced in the word Kon. However, the fact remains that the real word, Shabd, is vibratory. It can be heard but cannot be pronounced in words. Alphabets are unable to pronounce it. It is Shruti. Vedas describe it as Udgit, the melodious tune of the Atma. Adi Brahm, the Paramatma, thus permeated each element to give motion to them. The elements rubbed each other and, along with sound, produced heat and started burning. Great aura of light appeared, and the entire creation was filled with divine light. Satnam may be regarded as his ultimate name, which is tuneful and vibratory. It can only be heard or perceived, but cannot be pronounced by tongue. It is beyond the scope of alphabets, and divine light may be regarded as his ultimate form. Nobody can describe the glory of the word. Some description of it appears in all religious books of the world. It goes to prove that they knew about its reality and importance. But as time passed on, the followers lacked the method of practice of the word and attributed different meanings to it. They are now absolutely unaware of it. The word has been stated to be the cause of creation of the universe. There is no difference in the word and its flow. The word may be termed as the sound or a combination of sound vibrations. The word sound, a form of energy, in wave form also flows. But if this flow gets diverted from its real origin, it gets enveloped or encompassed by grosser sheets of materialism or Maya and gets adulterated. The word is the real cause of the administration of the world. All are the manifestations of the word. The word has assumed definite shape. One individual orders and the other carries out the order. Word or sound is the real symbol and manifestation of the consciousness, and man is known as the speaking animal. When word, that is, vibrations vanish from someone, he is regarded as dead. At the time of birth, it is often asked if the child has cried, or uttered word or sound, or not. If the child or infant at the time of birth does not cry, it is considered dead. Word is pervading every particle of the universe. The word exists wherever there is movement. In the wood, in table, chair, in every particle, the word is contained. The cosmic creation is full of word. All the forces that are at work in the world are of the word. Vibrations, energy waves, and motion of atoms and molecules.
The word is manifested in the Sadguru as well as in the disciple. Same is the case with our consciousness. One can attain the highest state of consciousness and spot of origin of the word by following its flow in one's own body. Moving with the flow of the word vibration, one can step up from first to the second and then to the third region and shorten our cycle of time and distance and will one day obtain Lord's appearance in one's own self. Any individual who understands and realizes fully the subtlety and delicacy of the word does not experience such difficulty in comprehending the reality. Very few people understand the importance of word, but it is only a bit of the word that throws a man into fit of anger, softens or pleases him, or makes him get ready willingly and happily to sacrifice his life even. Many had abdicated the throne and crown also. On the other hand, many people saddened by a word go to the extent of committing suicide. Kabir Sahib states, शब्द के मारे मर गए, शब्द ही त्यज्या राज, जो यह शब्द विवेकिया, ताका सरया काज. A word causes death, a word abdication. One who practiced and known it, his job was done. शब्द गुरु को कीजिए कैसे गुरु की यार, अपने अपने लोभ को ठौर ठौर बट मार. Practice Guru's instructions the way it was done by him and reach the destination without roaming aimlessly. शब्द हमारा हम शब्द के, शब्द ही लिए परख, जो तू चाहे मुक्ति को, अब मत जाए सरक. The word is ours, we of the word. You test, if necessary, the force of the word. If needing salvation, stick wholeheartedly to its worth. शब्द हमारा हम शब्द के, शब्द ब्रह्म का कूप, जो चाहे दीदार को, परख शब्द का रूप. The word is ours, we of the word. The word is Brahma's depth. If you want to have a glimpse of him, move with the vibratory word within. शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव. Everybody talks in words. It has neither hands nor feet. A word is like a balm. A word cuts all the deep. एक शब्द सुख रास है, एक शब्द दुख रास, एक शब्द बंधन कटे, एक शब्द गले फांस. A word is harbinger of peace. A word causes pain and war. A word brings salvation. A word causes bondage and bar. यह बड़ाई शब्द की जैसे चुंबक थाए, बिना शब्द न उतरे, कैसे करे उपाय. This is the glory of the word. It has magnetic attraction. Howsoever else you may try, you can't cross the ocean of Maya without the practice of the word. The word that exists in the consciousness is tuneful, melodious, and vibratory. It has the qualities of a magnet, and as stated by Kabir Sahib, it attracts the attention towards it, and the heart obtains unidimensional concentration. In the outer world, man on hearing the sound of sitar, flute, sarangi, etc., becomes charmed and loses himself. Their melodious sound and magnetic attraction is very charming.
When the state of fascination and absorption on listening to the gross word is so charming and effective, one can only imagine, but cannot describe, the wonderful state that one finds absorbed in on listening to the beat of the tuneful word of inner consciousness. The manifestation of the word that an individual comes across in the external world came into existence because of the internal or the inner word. In fact, the external word is its imitation. There is always a difference in the original and its imitation. When the imitation is so full of interesting, charming, and absorbing nature, the reality of the original can be well understood by those who have attained awareness. Hearing of the word, thus by the ears of the soul, is called Surat Shabd Yog practice. This is regarded to be the best practice and considered top quality sadhana. Sufis call it Sultan ul Izgar, that is, the king of recitation. One pointed concentration is very easily obtained by this practice. Neither does it require much penance nor severe controls. It requires the realization of the secret of inner regions and their words and ascending from region to region and word to word correspondingly, while listening to its beat in inner consciousness and keeping the goal, Drupad, in view in the practice. Nothing else is wanted in this method of practice. It is, however, essential that an individual practicing this yoga must avoid completely animal proclivities, provoking food and intoxicants of any type. He should consider everybody as the child and image of God and desist from causing annoyance. He should avoid teasing or hurting any living being and her feelings. Must not overeat. He should exercise restraint in his love for wealth, property, and women, and must find some time for worship and devotion for the practice daily. Realized Master, Sadguru, true Satsang, and real Satnam are most essential to cross the ocean of Maya and attain Jivan Mukt Avastha. Om.
ध्यान गुरुदेव से मिट जाएंगे ये विघ्न सारे। भक्ति भजन हरि नाम से ध्यान धर करगा भजन। करु प्रार्थना गुरुदेव से मिट जाएंगे ये कष्ट सारे। भक्ति भजन हरि नाम से ध्यान धर करगा भजन। जिंदगी में क्या रखा, एक दिन यूं ही मर जाएंगे। जिंदगी में क्या रखा, एक दिन यूं ही मर जाएंगे। धन और दौलत ये इमारत सब यहीं रह जाएंगे। मुक्ति कमा मुक्ति को पाओ, मुक्ति कमा मुक्ति को पाओ। ये प्रार्थना है आपसे, ध्यान धर करगा भजन। कर प्रार्थना गुरुदेव से मिट जाएंगे विघ्न सारे। भक्ति भजन हरि नाम से ध्यान धर करगा भजन। रात दिन जपे नारद मुनि, नारायण सुमरण किया। रात दिन जपे नारद मुनि, नारायण सुमरण किया। सैकड़ों को ज्ञान देकर ज्ञान का वर्णन किया। कोई फर्क रहता नहीं, कोई फर्क रहता नहीं। भक्त और भगवान में ध्यान धर करगा भजन। करु प्रार्थना
गुरुदेव से मिट जाएंगे ये कष्ट सारे। भक्ति भजन हरि नाम से ध्यान धर करगा भजन। कर दे समर्पण आज इस चौखट पे सर झुका के तू। कर दे समर्पण आज इस चौखट पे सर झुका के तू। कर ले क्षमा की याचना चरणों में अब लिपट के तू। बैरागी अब कुछ मांग ले। बैरागी अब कुछ मांग ले। अपने गुरु भगवान से ध्यान धर करगा भजन। कर प्रार्थना गुरुदेव से मिट जाएंगे ये कष्ट सारे। भक्ति भजन हरि नाम से ध्यान धर करगा